Very good afternoon to all of you. Alaikum. And your families are doing well. I'm Almas Basali and I'm the head of education and want to welcome you to the Bridging the Gap series. Towards today's topic, which is data analytics. Let me share the overall rationale for the which FCCA Pakistan has started delivering. The overall rationale of these webinars, as we know that in the FCCA qualification, we have introduced the structured business leader, which overall assesses in the integrated case study, overall organizations breadth and length of the functions, right? So what does that mean? That in SBL examination, where it assesses the technical capabilities that potential leaders need to demonstrate in the senior positions within organization, but at the same time focuses the importance and emphasis on the professional skills and behavior development. So we have a very broadest SBL examination, and then all are of practical nature. And this is where ACC, these students who are studying not only SBL, but studying these strategic professional level examinations, where we invite industry speakers and the experts and the leaders of their profession to talk about and share their knowledge and insights on these practical topics, which is aimed not only to overall broaden the horizon of these students, but also we want that students have the approach of studying these papers with the curious approach and explore more about the topics. So what does that mean? That we do not want you to end at the end of these webinars, but at the same time, of course, this webinar equip you at the same time, of course, encourage you to explore more. So I'm to share Rauf's profile with you, who has been kind enough to take out his time from his busy schedule, and he's with us. So I'm happy to share his profile. He's currently working as the head transformation in internal audit at HBL. His overall education credentials, Rauf is a fellow member of ACC and ICAP, and he has CPA Canada and his qualification from ICMA. He has had MBA in strategic management from Schulich School of Business, York University in Canada, and also possesses BSc in applied accounting from Oxford Brookes University. He is a regular speaker where he shares his knowledge and time voluntarily at various platforms of ACC, and we're thankful for that. So before I request Rauf, a wealth of knowledge and insights with you today, I would appreciate all the participants to share your questions, your comments, what you want to ask by advantage of Rauf's presence here. So please put your questions in the chat aspect, in the chat section of this GoToWebinar platform. And in the end of 20-25 minutes, where Rauf will be over with his sharing of knowledge, we'll be happy to take your questions. So with that, I invite Rauf to take the floor and please share his insight. Thank you very much. Thank you, Almas, and thank you, ACCA, for giving me the opportunity to speak to the associates, members, and students, members, affiliates, and students of ACCA to talk about data analytics. Data analytics is very close to my heart because I'm constantly working on digitalization, automation, and one component of that is data analytics, which we work on in the internal audit function of HBL where I work. What is data analytics? We'll talk about it. How can we benefit from data analytics? What are the types of data analytics? How we actually use data analytics in our world? And there will be some specific examples we'll be talking about in data analytics. Specific examples when I say we'll be talking about kahan pe hame internal audit mein data analytics hum use kar sakte hain. What is data analytics? Let's quickly move on to the main area कि हमें करना क्यों चाहिए data analytics. यहाँ पे कुछ definitions मैंने दी हुई है data analytics की कि क्या चीज़ है. The most important thing is अगर first one को आप देखेंगे तो that is the most comprehensive one which covers everything. लेकिन before we jump on to that, the most important thing in data analytics is we as an accountants have been using data for a very long time.
बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डाटा एनालिटिक्स में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए. डाटा जो है वो सिस्टम में बहुत अरसे से है, बट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि डाटा में जो कंजम्पशन है डाटा की वो बहुत ज़्यादा हो गई है. देयर हैव बीन many reasons for that. One of them is the use of smartphones. The other reason is people are getting very particular about what they want to see. Let me give you an example. Most of you would be watching the Cricket World Cup, which is going on, and the data which they show you, statistics they show you कि बाबर आजम ने इस साल इतने रन स्कोर किए हैं. This cricket have been going on for some time, लेकिन इस तरीके से डाटा नहीं आ रहा होता था आपके पास के आसिफ अली जो है, he is the top 3 lead person who scored the sixes, or who played a shot where six was scored this many number of times. हम as an audience, हम as a user have been so much involved in the usage of data कि हमें वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं. हमें अच्छा लगता है कि हम डाटा के मुताबिक काम कर सकें. अपने आप हमने ढाल लिया है डाटा के ऊपर. whoever gives you any number or whoever tells you कि हाँ पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, आप कहते हो क्या परसेंटेज यूज़ हो रही है, किस तरीके से you can justify what how many people are using it. So we as an audience, we as a user have been very used to of using the data nowadays. इसी तरीके से अगर if you think about organizations have been using data significantly. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, whether you want to talk about the startups or fintechs or the companies which are technology based, but companies which are not technology based, such as take the example of automobiles, take the examples of hotels. Don't you think they are more focused on कि हमें किस product को, किस customer को क्या service provide करनी चाहिए, and the basic user of that is कि आपने उसको target कैसे करना है, अपने audience के पास लेके कैसे जाना है. जो डेफिनेशन आपको नीचे नजर आ रही है, which is by one of the very known user of data, was without data you are just another person with an opinion. अगर आपके पास 6 लोग बैठे हुए हैं कमरे के अंदर and everybody is giving an opinion and you are the one whose opinion is supported by data, I am telling you any given day आपके पास जो सबसे ज्यादा आउटपुट आना है वो यही आना है कि आपकी your opinion would be listened the most. अगर डाटा को आप देखेंगे और इफ़ यू कंपेयर इट विद द ओवरऑल डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि हम सब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड वन ऑफ द सीईओज ऑफ अ ग्लोबल बैंक फ्रॉम यूएस सेड दैट कि शायद इतनी तेज़ी से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाते जितनी तेज़ी से कोविड ने हमें फोर्स किया, बिकॉज वी डिडंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल, वी हैड सम एसओपीज टू फॉलो, जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत तेज़ी से काम हुआ. हो तो पिछले 10 15 20 साल से रहा है, बट पिछले 1 1.5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दराज हमारे पास पाकिस्तान में भी, द फ्रीक्वेंसी विच वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दराज, फूड पैंडा, यू कैन टॉक अबाउट एयरलिफ्ट, जो सीड मनी हमारे पास आना शुरू हुई है इन फिनटेक एज वेल एज स्टार्टअप्स, वो बहुत ज़्यादा है. तो डिजिटलाइजेशन ओवरऑल हमारी जिंदगियों में आ रही है, विच इज़ मेकिंग आवर लाइफ ईजियर एज वेल. टेक द एग्जाम्पल ऑफ करीम एंड ऊबर एंड डिलीवरी सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बाइकिया के थ्रू हो, चाहे वो एयरलिफ्ट के थ्रू हो, वी हैव बीन यूजिंग इट. इन दी एक्चुअल सेंस हम एज एन अकाउंटेंट्स कहाँ पे ये चीज़ देखते हैं? जाहिर है ये जो बाइकिया का प्रोडक्ट है ये तो फ्रंट एंड वाले लोग डिफाइन कर रहे होंगे कि इस तरीके से हमें यूज करना, बट एज एन अकाउंटेंट्स इन फाइनेंस फंक्शन, इन ऑडिट फंक्शन, इन एचआर फंक्शन, जहाँ पे भी हम एज एन अकाउंटेंट, एज एन एसीसीए काम कर रहे होते हैं, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग डाटा टू द nth लेवल. वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द डाटा जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते. there is a concept of big data. Let me go to the next slide जहाँ पे हम बात कर सकते हैं. There is a concept of big data के big data के ऊपर हम काम कर सकते हैं. I'll just give you an example. Uh, let me just turn off my webcam because it is giving me an error कि आपके पास से शायद थोड़ा सा स्क्रीन में मसला आ रहा है. Let me know अलमास अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही है तो I'll stop sharing the screen as well. What I was telling you is कि अगर हम अपने पास एज एन ACCA देखें कि हम कहाँ पे डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल गेट टू सी कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ हो रहा है हमारे पास फाइनेंस डिसीजन मेकिंग के अंदर. हमारी जो Sorry, अकाउंटिंग Rauf. बहुत पहले. जी जी अलमास. We have stopped seeing your slides. So if you can upload them again. Oh, you cannot see them? Okay, let me just share it.
Let me just change the screen. Just give me a second. मुझे एक second दे दें, मैं इसको अभी सही कर लेता Sure. हूँ. जी, you would be able to see my slides now. Yes, we do. Thank you. थैंक यू अलमास फॉर टेलिंग मी. अच्छा, इसमें मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि हम लोग एज अ फाइनेंस फंक्शन वी आर यूजिंग डाटा अलॉट, और उसमें जो हम लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास अगर आप डाटा का कंजम्पशन देखेंगे, डाटा की यूजेज देखेंगे, पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन में इतना डाटा का यूजेज नहीं था. अभी आप रिसेंटली देखें IFRS 9 में, the way IFRS 9 is asking you to share your data, they are asking you data for last 10 years, 15 years, 20 years, जिसमें आपके पास credit losses हुए, expected credit losses based on historical data अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो you need all those data. उनका probability of default निकालें, उनका loss given default निकालें. Similarly, if you look at the IFRS 16 जो कि leases की बात करता है, if you just see के leases के लिए वो आपसे जिस level पे interest expense और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने की बात करता है, फॉर द सिंपल जो IAS 17 में लीजेस की बात हम करते थे, जिसमें सिंपली आप ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई कर लेते थे. सो from accountants perspective, things are getting more complicated as the time passes, and organizations are becoming more mature in data, and they want you to pursue that data and look for that data and start working on those things. So as an accountants also, we have to be very careful where we are using data. Let me just quickly cover some of the benefits of the data. What are the main benefits of data? और इसमें मैं आपसे कुछ examples भी share करता हूँ, and so to make it very interesting. Or let me just share examples from my industry, from my own experience. Objective decision making. मैं आपको इसकी example देता हूँ. जैसे कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, IFRS 9 की मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की इसके अंदर, या अगर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैंने करनी है बेस्ड ऑन डाटा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे अभी 19 रीजन्स हैं हबीब बैंक के जिसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं, और उनमें से अगर एक रीजन उसमें सेल्स कम हो रही हैं, या एक रीजन ऐसा है जिसमें नया कस्टमर हमारे पास कम आ रहा है, या देयर इज अ रीजन which has anomalies as part of internal audit, which is more than any other region, we can very easily identify कि ये जो है ना, this is something which we should be working on, or this is something where we have to identify the thing. और anomalies को हम बड़ी आसानी से pick भी कर सकते हैं और उन पे काम भी कर सकते हैं. One more example I'll share with you is which is not maybe very logical in Pakistan, which is not very much used in Pakistan, but in my experience in Canada, we used to use it a lot, which is credit score. अगर आप कनाडा में कहीं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाएं, और इन पाकिस्तान आल्सो दे चेक योर ECIB, which is credit information, electronic credit information, but in Canada they have identified a very specific score कि आपका 750 का स्कोर है तो will give you the credit limit of $5,000. अगर आपका 600 का क्रेडिट स्कोर है तो will give you the limit of $5,000, $4,000 or $3,000. So decision making becomes very objective when you have right data available to support what you are saying. इसी तरीके से जब आपने लोन देना है और आपने डिसाइड किया कि मैं इसको इतना लोन दूंगा, तो क्रेडिट स्कोर will make your life very easy. I'll give you an example in Pakistan's environment. अभी आप क्रेडिट कार्ड का लोन अप्लाई करने के लिए जाएं, if we have all the data available कि आपके पास और कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और आपकी क्या तनख्वाह है, we can very easily identify कि इतना आपको क्रेडिट स्कोर मिलना चाहिए. This is the level of default which we are expecting. This is the interest rate which we should charge from you. So this is very easy for us कि हम बड़ी आसानी से objective decision making कर सकते हैं based on the data which is available to us. Second one is population and not sample. This is one of the critical one from finance and audit perspective. देखिए, हम जितनी भी बात करते हैं, अगर मैं ऑडिट में हूँ या हम ऑडिटिंग की बात करते हैं, चाहे वो फर्म की ऑडिट हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट, या फाइनेंस में अगर हम एज अ फाइनेंस कंट्रोल फंक्शन काम कर रहे हैं, ICFR में काम कर रहे हैं, बजटिंग और प्लानिंग की बात करें, इफ यू हैव द डाटा अवेलेबल ऑन पॉपुलेशन बेसिस, जैसे कि मैं अब टेस्ट करने के लिए गया और मैंने कहा कि
बैंक में हमारे पास 14 मिलियन कस्टमर्स हैं. For 14 million customers we charge everyone 100 rupees in their fee. हम क्या करते हैं आमतौर पे, हम कहते हैं कि 100 रुपीज़ अगर मैंने 14 मिलियन कस्टमर से मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो मेरे पास 1400 मिलियन इनटू 12 मेरे पास ये नंबर आ जाना चाहिए, विच इज इक्वल टू 168. तो 168 मिलियन की मेरे पास टोटल पूरे साल का रेवेन्यू होना चाहिए. प्लस माइनस करके हम थोड़ा सा उसमें वेरिएशन ले लेते हैं. बट इफ आई जस्ट यूज द डाटा और मेरे पास 14 मिलियन कस्टमर्स हैं एंड आई यूज आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज और अ सिंपल पावर बीआई टूल, जिसमें मैं जाके कहूँ कि इनमें से किसी को अगर 100 रुपए चार्ज नहीं हुए किसी स्पेसिफिक मंथ में, तो गिव मी दी आउटपुट. The filtration process is very easy. It's a very simple language which we use in Power BI. Dex language हम use करते हैं. It's so easy कि आप just one liner you will write and it will give you the output कि इन customers को हमने 100 रुपए चार्ज नहीं किए हर महीने के. तो when we are working on population, it's very easy to identify. अच्छा इसको हमने चार्ज नहीं किया, that was the reason. इसको अच्छा इतने सारे लोगों को चार्ज नहीं किया, what was the reason. अच्छा इस कस्टमर ने या इस यूजर ने अपने तमाम कस्टमर्स को मना कर दिया कि वो चार्ज नहीं करेंगे, एंड देन इट विल गो टू द फर्स्ट वन. ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी उसकी बेसिस पे. तो पॉपुलेशन गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू अस कि हम किस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं. Third one is predictive modeling. Everybody would have known about it. अगर आप थर्ड वन के ऊपर देखेंगे तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, अमेजोन पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, पाकिस्तान में दराज पे चले जाएं, एंड इफ़ यू आर डूइंग और इफ़ यू आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम मेट्रो या एयरलिफ्ट की ऐप से, वॉट एवर, एज सुन एज यू क्लिक समथिंग कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आ जाती है. आपको बताना शुरू कर देता है कि हाँ आपने नेक्स्ट टाइम ये चीज़ बाय की थी. जैसे अगर मैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए सीरियल बाय करता हूँ, तो इट विल टेल यू कि आप सीरियल तो बाय कर रहे हैं, बट व्हाई डोंट यू बाय अ फीडर एज वेल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट बाइंग पैम्पर्स एज वेल, डायपर्स आप क्यों नहीं बाय करते. इसी तरीके से अगर आप सब लोगों ने फेसबुक, आई एम श्योर फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, एवरीबडी इज यूजिंग इट. फेसबुक का अगर आप एल्गोरिथम देखेंगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के ऊपर, इफ यू वॉच अ वन फुल वीडियो, नेक्स्ट टाइम दे विल शो यू मोर वीडियोज लाइक दैट. if you are interested in buying, अगर आपने गूगल किया कि shoes, where would I find shoes close to me, or which Habib Bank's branch, next time they'll start showing you ads or they'll start showing you feeds based on your searches. This gives you the impression कि ये इनको कैसे पता चला. They are using data, they are using modeling. अगर आप इन लोगों का मॉडल चेक करेंगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस इज अ बेटर कस्टमर सर्विस बिकॉज आई डोंट हैव टू सर्च अगेन एंड अगेन. बट अगर आप इनका मॉडल चेक करेंगे तो फ्रॉम द मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग्स, व्हेन आई गो एंड टॉक टू फेसबुक कि मेरी HBL की एड आप फेसबुक पे चला दें, तो दे आस्क मी किस पॉपुलेशन के लिए चलानी है. मैं कहता हूँ HBL एग्री है, एग्री का प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर की के लिए हम लोन दे रहे हैं, व्हाई डोंट यू रन इट इन द रूरल एरियाज. They have such a strong data analytics, data predictive modeling available. They will run it for 1,000 or 100,000 people who are in rural areas based on their GPS. So which gives us comfort कि हाँ वहीं पे ये एड रन होगी. अगर मुझे क्रेडिट कार्ड की या गाड़ी की एड चलानी है तो मैं कहूँगा कि आप उनको शहर में चलाएं. इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये लोग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे चले गए. अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन, जैसे बाकी सब जगहों पे हमने ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात की, इसी तरीके से देयर आर कंपनीज व्हिच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री हियर. अगर आप देखेंगे तो देयर आर टाइम पीरियड्स जब एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट चार्जिंग यू. जैसे अगर आप जून जुलाई में जाके इन जगहों की टिकट्स बुक कराते हैं जो कि मालदीव्स है, श्रीलंका है, दुबई है, जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर टूरिज्म, you will see that they'll charge you more money. Similarly, if you are looking for something on any specific date closer to Christmas, they have the logics available, they have the conditions available. They know कि इस वक्त दुबई में वर्ल्ड कप चल रहा है या एक्सपो चल रही है, तो a lot of people will be traveling to attend Dubai. Their rates will be different. इस तरीके से बहुत ज़्यादा based on market conditions, they'll start sharing some of the insights or they'll start charging different rates. Efficiency and productivity gain. Another benefit out of data analytics is the efficiency. क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है, मैं पॉपुलेशन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी आ जाएगी. आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम फाइनेंस और ऑडिट पर्सपेक्टिव. जब मैं पहले 10 सैंपल्स देखता था और अब अगर मैं 1000 सैंपल्स देख रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन पॉपुलेशन, एफिशिएंसी तो खुद ही आ गई. हाउ विल वी
use the productivity gain is also very easy to identify कि आपने बड़ी आसानी से अपने पास आइडेंटिफाई कर लिए एरियाज जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही. इसमें जो नीचे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मैंने एग्जांपल दी है बाय इंटीग्रेटिंग diverse data set can ultimately result in efficiency and in employee utilization. अगर आपको पता हो कि हमारे पास ऑडिट में एक्सटर्नल ऑडिट्स हमारे पास मई जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते हैं and then September October November they are available, you can combine this data through BAMs through their charge out rates and then show it to everyone कि हाँ ये देखें इसका charge out rate कम था, इसकी attendance इस पीरियड में ज़्यादा है, तो why don't we start using them. इन्वेंट्री स्टॉकिंग के लिए हम क्या चीज़ हमें रखनी चाहिए, कितनी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, कितनी चीज़ नहीं होनी चाहिए. दिस इज इन सप्लाई चेन डाटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू द nth लेवल. बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में डाटा एनालिटिक्स के ऊपर काम होता है. कौन सी चीज़ हमारे पास बिकती है, क्या उसकी लाइफ साइकिल है. दिस हैज़ बिन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन डाटा एनालिटिक्स की वजह से दिस बिकम्स वेरी वेरी ग्रैनुलर. बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाके वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. ड्राइवर ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. You can take a lot of examples जहाँ पे data analytics की वजह से नई चीज़ें यूज़ हो रही हैं. Recently जो स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया है उसका एग्जांपल it is the right innovation in the right model. Pakistan is always looking for loans or always looking for dollars to increase their foreign exchange reserves, and currently this year actually last year September they actually launched रोशन डिजिटल अकाउंट के जो भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज है, they can open an account, they can use it in Pakistan, they can buy cars, buy homes in Pakistan for out of that money, or that money will stay in Pakistan as a foreign exchange reserve. It is a success story from their part that they have over $2 billion in Roshan digital account, which was never there. और ये पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट अपनी फंडिंग के लिए, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए यूज कर सकती है. तो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, जो कि इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, इट इज अ न्यू स्टार्टअप, इट इज अ न्यू development based on the data which was available. Going on to the next slide, after the benefits, let's talk about कि हम कौन से टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक्स हैं. हमारे पास कुछ बेसिक टाइप्स हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. एवरीबडी नोज के बेसिक ट्रेंड्स किस तरीके से हैं. आप एक्सेल के अंदर जो बेसिक एनालिटिक्स करते हैं जिसमें कस्टमर पैटर्न्स आप बना लें एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आप निकाल लें, दैट इज द बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के हाँ हम बता रहे होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पहले हम किया करते थे 14 मिलियन कस्टमर्स हैं, अगर 100 रुपए हर कस्टमर से मैंने हर महीने चार्ज करने हैं, तो दिस इज द नंबर ऑफ 1400 million per month is my revenue. That is the descriptive basic level of analytics. Second one is diagnostic analytics. Diagnostic one is used to identify the problems कि कहाँ पे anomalies आ रही हैं, किस तरीके से मैं इनको यूज कर सकता हूँ. जितनी भी मैं अभी पिछले पेज पे एग्जांपल दे रहा था, other than predictive analytics, they were all examples of diagnostic analytics. हम कैसे anomalies को identify करते हैं, हम किस तरीके से areas of improvement identify करते हैं. These are all with the help of diagnostic analytics. In main areas, what you do is you combine multiple systems. You have data coming out of various systems. जैसे भी मैंने example दी थी जिसमें मैंने कहा था कि आपके पास charge out rate का ratio आ रहा होगा और आपके पास attendance record का ratio आ रहा होगा, and you will combine both the things and you will identify which one is available. ये मैंने आपको example दी थी जहाँ पे कि सैंपल की जगह आप पॉपुलेशन पे जाके आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो यू विल go to 14 million records which is not available, which cannot be done on descriptive analytics. You'll do a further analysis and you will identify कि इसके अंदर मैं कहाँ से कैसे correlation निकाल के अपनी analytics कर सकता हूँ. Prescriptive is a little bit more detailed than diagnostic analytics. इसमें हम क्या करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव के अंदर कि हम जो अभी एनालिटिक्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने कहा कि आपको इट विल टेल यू कि वेदर जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आपको इफ यू बॉट दिस यू विल बी एबल टू बाय दिस, या फिर अगर आपने क्रेडिट स्कोर की जो हम बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन द क्रेडिट स्कोर दिस इज हाउ मच यू विल बी अर्निंग, दिस इज हाउ मच योर क्रेडिट स्कोर विल बी. कौन सा बंदा किस वक्त डिफॉल्ट कर जाएगा, कौन से बंदे के पास हमें कब जाके मसला होगा. These are the type of the analytics which you perform on prescriptive analytics. If we go further down, predictive analytics, this is the predictive में भी आप अभी तक आप लोगों को predictive बता रहा था, which was number 3. If moving on to predictive analytics के अंदर you predict the outcome कि क्या चीज किस तरीके से जाके निकल के आएगी,
you run data modeling, you run predictive analytics, and then you come out to the conclusion के ये चीज प्रेडिक्ट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपने अमेजोन और अदराज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में जब हम आते हैं तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जिसके अंदर आप यू वांट टू आइडेंटिफाई कि जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ये चीज़ निकल के आई थी। यू यूज अ लॉट ऑफ डाटा। मेरा नहीं ख्याल हम पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं। व्हेन आई वाज स्टडीइंग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की जहाँ पे बात हो रही थी, दे वांटेड टू टॉक अबाउट कि हम अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि नेक्स्ट टाइम फॉरेस्ट फायर कहाँ लगेगी, कौन सी जगह पे जाके लगेगी, तो दिस इज व्हाट यू डू विद द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में फायर जो फॉरेस्ट फायर की लोग बात कर रहे थे, उन्होंने उसमें एनालाइज किया हुआ था कि हाउ काम द एनवायरनमेंट इज। व्हेन आई से काम द एनवायरनमेंट इज कि वहाँ पे इतनी खुश्की है कि पत्ता इतना सूख चुका है कि वहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं। वहाँ पे जो हवा चल रही है वो इस पैटर्न पे चल रही है। वहाँ पे जो लोग गए हुए हैं उनके पास ये एनवायरनमेंट है, इस तरीके से हवा फैलती है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स विच दे डू टू आइडेंटिफाई कि हाँ यहाँ पे अब ये इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर आ सकता है या इस तरीके से ये चीज़ प्रोग्रेस करेगी। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मेरा नहीं ख्याल हम पाकिस्तान में भी इतने मेच्योर हैं कि हम कहीं पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात करें। जो कंपनीज की मैंने आपको एग्जांपल दी, दे आर डूइंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। जो हम अपने पास अभी तक जहाँ पे वी आर एट द बेसिक लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के अंदर भी वी वांट टू डू अ लॉट मोर, जिसकी मैं भी आपसे एग्जांपल भी शेयर कर लूंगा क्विकली इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes। मूविंग ऑन, दीज आर सम ऑफ द डेटा एनालिटिक्स टूल्स। मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग देने की कोशिश की है आपको। द ones which are in red color, a lot of you would have used it। Microsoft Excel के अंदर भी हम कई सारी जगहों पे डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। नंबर 9 में पेयर हो रहा है आपके पास। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम ऑफ द विजुअल बेसिक एनालिटिक्स, VBA के अगर आप काम करना शुरू कर दें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में छोटे लेवल पे आप डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कर सकते हैं। आफ्टर 400,000 रॉज और 500,000 रॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो एनालिटिक्स में सिस्टम फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फॉर दैट वी यूज नंबर 4 पावर BI और नंबर 8 टैबलो। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी एनालाइज करनी है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के लिए जिसके अंदर हमारे पास 4 मिलियन 5 मिलियन रॉज होती हैं, तो दीज आर द टू टूल्स। पावर BI क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो द कंफर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज देयर। अ लॉट ऑफ पीपल यूज पावर BI बिकॉज ऑफ दैट। टैबलो जो है इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। इसमें जो विजुअलाइजेशन है दैट इज बेटर देन पावर BI। और टैबलो जो है इट इज ऑल्सो वेरी गुड टूल। लेकिन क्लिक व्यू या टैबलो का मेन रीजन ये है कि जब व्हेन यू आर कंपीटिंग विद माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स अवेलेबल जो कि शायद आपको आसानी से हेल्प कर देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो नंबर 10 में मैंने जिक्र किया हुआ है जिनका पाइथन का और आर का, दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर बीइंग यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू डू द प्रोग्रामिंग। इन दोनों के नंबर 10 के अलावा जो क्लिक व्यू है, टैबलो है, पावर BI है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, these are easy to use। You can take a course like 3 हफ्ते 4 हफ्ते के जो कोर्सेज होते हैं, you can take those courses and you will be fluent in using Power BI। थोड़ा सा डाटा के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे, and then you will be in a good shape to use those areas। लेकिन ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले जो हैं, ये सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर और पाइथन वाले जो हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको SQL या ओरेकल इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं, you would need to write the query, proper query in those। These are the data analytics tool I wanted to talk about। Let's move on to the next slide कि हम किस तरीके से data analytics करते हैं। This is a process one by one, और इसी 8 step process की basis पे मैंने examples भी share की हुई हैं from internal audit perspective on next 2 slides। सबसे पहले आपकी डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है कि डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। दिस इंक्लूड्स आंसरिंग टू द व्हाई एंड व्हाट। हमने आउटपुट क्या निकालना है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। हमें ये नहीं पता होगा आउटपुट निकलेगा क्या, बट वी वुड नो कि हम इसको जब यूज करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग। कि मुझे एनोमलीज निकल के आना शुरू हो जाएंगी, मुझे जो है वो एक्सेप्शंस निकल के आना शुरू हो जाएंगी, मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा मुझे काम करने की ज़रूरत है।
Data collection, this is one of the important aspect. अगर आपकी organization में data lake बनी हुई है, data warehouse है, तो it will be easier to do the data collection. Otherwise, you will have to do a lot more than that, और market research और इन सब चीज़ों से data gather करना takes a lot of time. Data cleaning, one of the most painful process I would say. Data collection में जो है ना, data collection is easier क्योंकि आपके पास data जो है, जिस level का data आप data analytics के लिए use करते हो, that is either coming in the form of rows and columns, और अगर आप advanced level करना चाह रहे हो, even in the comment section जो आप Facebook पे या फिर app store पे देखते हो, you will collect the data, but cleaning the data, making sure the data is usable, it is the most comprehensive, it is the most painful process in the whole process. आपको बहुत ज़्यादा इसमें time लगता है data cleaning में, क्योंकि data जो है आप कई सारे systems से combine कर रहे होते हो, although you have primary key and foreign keys available, but still you have to translate data in a different format. बहुत सारी जगहों पे जो है वो data readable नहीं होता, text में चला जाता है number वाला data, और vice versa spaces आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें data की transformation करनी पड़ती है. And the tools which we were discussing on the previous slide, जिसमें Power BI की हमने बात की थी, जिसमें Tableau की बात की थी, जिसमें हमने Python की बात की थी, they are very good in helping you clean the data. उसमें transposition करनी हो, उसमें transformation करनी हो, they are very helpful. Microsoft Excel अभी it has a long way to go on data cleaning exercises. It is not there. Coding, it is one of the things जो मैं भी कह रहा था, अगर आप Power BI में कर रहे हैं तो coding you can still do. उसमें किस तरीके से measures लगाने हैं, किस तरीके से if and buts के areas को identify करना है, but overall जो है coding Python और R में भी आप करा सकते हैं. Number 5, data analysis tools and execution. जब आपने कोडिंग कर लिया, आपके पास आउटपुट आना शुरू हो गया, तो यू विल स्टार्ट यूजिंग द डाटा. जैसे मैंने इसमें बात की हुई है कि पावर बीआई आप यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे. कोडिंग से आपने डाटा निकलवा लिया, बट यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग द डाटा कि हाँ इसका किस तरीके से हमने इसको यूज करना है. डाटा वैलिडेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसके अंदर डाटा वैलिडेशन के अंदर जो डाटा आउटपुट आया है, यू वुड लाइक टू चेक द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो डाटा प्रेजेंट करने जाएंगे, अगर आपने कहा कि इस कस्टमर ने हमें पे नहीं किया, यू हैव टू मेक श्योर दैट द कस्टमर इज एक्चुअली द कस्टमर. आपको टैग टू फ्लोर, फ्लोर टू टैग टेस्टिंग करनी पड़ती है. एक्चुअली वी डू अ लॉट ऑफ सैंपल्स बिफोर शेयरिंग द डाटा, क्योंकि हम जितना भी सैंपल कर लें, अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन्स 500 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हैं हर महीने की, which we have to run or run the data on, you can imagine कि हम अगर उनमें से 100, 200, 1000 भी वैलिडेट कर लेते हैं, it is just the tip of the iceberg. आपको पता ही नहीं होता पूरे डाटा के अंदर क्या है. तो it takes us 5 or 6 times going back and forth to do the validation of data. और डाटा बड़ा जिस तरीके से क्लीनिंग में इशू आता है, तो क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग का असल इम्पैक्ट यहाँ डाटा वैलिडेशन में आके आपको पता चलता है कि डाटा क्लीन सही से नहीं हुआ था. डाटा इंटरप्रिटेशन, जाहिर है जो अभी तक काम कर रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे कोडर्स होते हैं, या फिर वो जो दे हैव नो आइडिया कि उनके ऊपर बिजनेस लॉजिक क्या लगानी है. तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है बिजनेस की टीम करती है, डाटा वैलिडेशन और उसके ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड दे टेल यू कि which way you should do. डाटा विजुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं. द बेस्ट वे, जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा होगा बॉटम में नजर आ रहा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ पिक्चर इज व्हेन इट फोर्सेस टू नोटिस व्हाट वी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी. तो विजुअलाइजेशन जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. पीपल डोंट रियलाइज इट, लेकिन जिस तरीके से आप विजुअलाइजेशन करेंगे, अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट देयर येट, लेकिन जो बाकी टूल्स हैं दे आर वेरी गुड. टैब्लो की विजुअलाइजेशन इज बेटर देन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, लेकिन पावर बीआई इज ओके, यू कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन देयर. और if you know what you are doing, what you want to show, आप थोड़ा सा उस पर टाइम लगाएं विजुअलाइजेशन के ऊपर, तो you will be able to get a separate person. अगर आप इसमें देखेंगे तो you will start seeing कि कितने किस्म के लोग होते हैं. डाटा क्लीनिंग वाला बंदा जो है वो सेपरेट होगा, कोडिंग के लिए एक सेपरेट बंदा होगा, they can be combined, लेकिन डाटा क्लीनिंग वाला जो है he must have some idea of what data is going on. कोडिंग वाले लोग they write the algorithms, they write the queries, which takes a lot of time. डाटा वैलिडेशन हमारी आमतौर पे वो एक्सपर्ट टीम कर रही होती है, विच अंडरस्टैंड्स द बिजनेस मोस्ट. इंटरप्रिटेशन हमारी वो टीम कर रही होती है जो कि विच अंडरस्टैंड्स कि हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, और विजुअलाइजेशन के लिए हमें विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, देयर आर विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स जिनके साथ हम बैठ के वो काम करा रहे होते हैं कि किस तरीके से इस डाटा को प्रेजेंट करना चाहिए. जो भी हमने पिछले पेज पे बात की थी, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे की है कि डाटा नीचे से आना शुरू होता है, फिर क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन.
वहाँ पे हम करते हैं। जो फर्स्ट 2 फेजेस हैं वो बॉटम पे कवर हो जाते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है वो ट्रांसलेशन में कवर हो जाते हैं, और सेवन्थ और एट्थ जो है वो विजुअलाइजेशन के अंदर हम कवर कर रहे होते हैं। तो दिस इज दी हायरार्की जहाँ पे डाटा डिफरेंट तरीकों से यूज हो रहा होता है। These are some of the examples. I think we are on time. अभी हमारे पास 20-22 मिनट हैं, तो we just wanted to share some of the examples कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अगर आपने ऑडिट करना होगा तो क्या क्या चीज़ें आप किस किस जगह पे जाके आप आइडेंटिफाई करेंगे। हम इसको देख सकते हैं। आई हैव शेयर्ड अनदर एग्जांपल विच इज दिस इज द डाटा विजुअलाइजेशन चीज़ जो आपको नज़र आएगी, और ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ हम बैंकिंग के अंदर कर रहे होते हैं, ये उसकी आउटपुट है कि उसमें किस तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। Let's do this one. Financial industry की due to the increased focus on anti-money laundering, banks need to determine no transaction executed by bank for walk-in customer who CNIC were incorporated in anti-terrorism list. ATA के अंदर किसी की जो ATA स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, उस लिस्ट के अंदर किसी भी कस्टमर का CNIC मैच ना हो रहा हो, खास तौर पे उन कस्टमर्स का जो यूटिलिटी बिल्स पे करने आते हैं या जो कैश ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं, सपोज प्राइस बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं या कोई रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, हु आर नॉट द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर ली कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। डाटा कलेक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंट किस्म के डाटा को की बात कर रहे होंगे। जो ATA लिस्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट लिस्ट है, उसको हमें चाहिए होगा। जो फील्ड्स हमें चाहिए होंगी, वी विल डिफाइन दैट फील्ड कि कौन सी ब्रांच पे हुआ है, कौन से रीजन में हुआ है, कौन से दिन हुआ है, डेट क्या थी उस ट्रांजेक्शन की, CNIC नंबर क्या था उस कस्टमर का, और किसने वो ट्रांजेक्शन अप्रूव की है। Because once you have the ATA list, comparing it with ATA lists, CNIC and your customer CNIC is very easy. Data cleaning, as I was telling you, कि it's very difficult. आपको अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी ने गलत CNIC नंबर डाल दिया तो it becomes very difficult. इसी तरीके से अगर किसी ने डैशेस डालना शुरू कर दी, नॉर्मली वी डोंट एक्सेप्ट, हमारे पास इनपुट कंट्रोल्स डाले हुए होते हैं कि डैश वगैरह एक्सेप्ट ना करें, बट अगर किसी ने 40101 लिखने की कोशिश की या 42101 लिखने की कोशिश की और उसका CNIC उसने 4 की जगह 2101 से शुरू कर दिया और एट द एंड ही जस्ट एंटर्ड 0 just for the sake of it, it becomes very difficult to identify. हमारे पास जो अनयूजुअल चीज़ें हैं वो हमें निकालनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर डाटा लेके जाना पड़ता है। जैसे I'll give you an example, CNIC जो है, मुझे उस कस्टमर का CNIC मैच करने के लिए we'll have to see how many CNIC data we have available. हमारे पास आमतौर पे एक से ज़्यादा CNICs होते हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमें डाटा को काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी करना पड़ता है। इसमें डाटा क्लीनिंग में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये भी होता है कि यू डोंट वांट टू टेक अ लॉट मोर डाटा देन इट इज़ नीडेड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। जैसे कि डाटा के अंदर आप बात करते हैं कि जैसे ऊपर मैंने स्टेप 2 के अंदर 6 फील्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, बट 6 फील्ड्स की जगह अगर मेरे पास 50 फील्ड्स हैं तो डाटा का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एरर को जब हम एनॉमली को निकालने के लिए डाटा को रन करेंगे, इट टेक्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स ऑफ मोर टाइम। एंड व्हेन यू रन ट्रांजेक्शन का डाटा, क्योंकि नंबर 1 में ट्रांजेक्शन के डाटा की हम बात करें, नो ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूटेड, तो यू कैन इमेजिन के 500 मिलियन ट्रांजेक्शंस के ऊपर जब वो डाटा रन होगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वी shrink the data as much as possible. नंबर 4 में कोडिंग करेंगे। वो कोडिंग करने का एक छोटा सा हमने एग्जांपल दी है कि किस तरीके से कोडिंग होगी। यूटिलिटी बिल्स पेमेंट की, प्राइस बॉन्ड इनकैशमेंट की बात करेंगे, वॉक इन कस्टमर को किस तरीके से इस तरीके से कॉलम्स ऐड करके विल बी एबल टू डू द कोडिंग। कोडिंग जो है आमतौर पर हमारे पास कोडर्स होते हैं, दे डू इट, डाटा इंजीनियर्स दे डू इट। पावर BI में भी आप कोडिंग कर सकते हैं बाय राइटिंग सम ऑफ द क्वेरीज इन डेक्स, और अगर आप पाइथन और R में करना चाह रहे हैं या यू वांट टू रन सिंपली क्वेरी ऑन द SQL, यू कैन आल्सो डू इट। कोडिंग को हमने यहाँ कंटिन्यू किया हुआ है। ये जो बेसिक कोड आपको ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज द कोड विच वी राइट। नंबर 5 में डाटा एनालिटिक्स टूल्स एंड एग्जीक्यूशन, हम पावर BI को यूज करते हैं क्वेरी रन करने के लिए। क्वेरी रन करने के बाद किस तरीके से हमने उसको डाटा को आउटपुट निकालना है, उसके बाद हम उसकी वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन में भी एक्चुअली गो टू द सिस्टम, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसके कि हाँ ये जो चीज़ आ रही है, CNIC नंबर जो आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही CNIC है। सैम्पल साइज जो उसकी गाइडेंस हमने ऑडिटिंग में पढ़ी हुई होती है, तो दैट विल टेक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली एंड रिजॉल्व इट। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आप खुद भी कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के, इसका क्या मतलब है, कौन से कस्टमर्स हैं जिनका नाम ATA में आ रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, जो हमने यूजर मांगा था ना, इज इट शोइंग यू सम इंडिकेशन
कि हाँ कहाँ पे हमें इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे हमें रिस्क मिटिगेशन करनी है। नंबर 8 जो आपको नज़र आ रहा है, यू विल बी एबल टू सी कि वो हमने सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन करनी है, जैसे नंबर ऑफ एटीएम मैच्ड, ज़ाहिर है ये सारा का सारा डाटा हमने खुद बनाया हुआ है फॉर दिस वॉक इन कस्टमर्स के CNIC हमने खुद डाले हैं इसके अंदर कि ये कस्टमर्स इनका ये ट्रांजेक्शन अमाउंट था। आमतौर पर 5-5 मिलियन की वॉक इन कस्टमर में हम ट्रांजेक्शन करते नहीं हैं। डेट ऑफ इंक्लूजन क्या है, डेट ऑफ एक्सक्लूजन, ये ATA लिस्ट की बात कर रहे हैं कि किस दिन ATA में नाम आया था उसका, किस दिन ATA से निकला है उसका नाम, नंबर ऑफ ATA मैच ट्रांजेक्शन्स, फिर हम अलग अलग उसमें देख लेते हैं रेमिटेंसेज में इतनी ट्रांजेक्शन्स मैच हो रही हैं, कैश डिपॉजिट इतने इतने हमारे पास हो रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट। उनमें से हमने देख लिया एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, फ्रोजन बाय गवर्नमेंट कितने हैं, डोरमेंट कितने हैं, और रीजन वाइज ही हमने साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल की ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से रन कर लिया। क्विकली कमिंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, ये हमने जो स्टेप्स किए थे उन सबको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स के अंदर। दिस इज़ वेयर वी आर करंटली यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। अगर मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे ही जाता हूँ, चलें इसमें इस मरतबा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे चले जाते हैं, कंपेयर वेंडर एंड एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन। इसमें बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई वेंडर आपका एम्प्लॉई ही तो नहीं है। अगर मैं वो जो सेग्रीगेशन और ड्यूटीज़ की बात है वो हम कर सकते हैं। एनालाइज एम्प्लॉई एक्सपेंस रिपोर्टिंग, बड़ी आसानी से जो है हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉई की एक्सपेंस रिपोर्ट बाकी एम्प्लॉई से कितनी डिफरेंट आ रही है या उसमें कोई स्पाइक तो नहीं है। हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स को मॉनिटर किया जा सकता है कि इनकी हाई वैल्यू है तो आर वी कीपिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जनरल एंट्री पॉपुलेशन को हम एनालाइज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द एरिया जो कि नंबर 6 में लिखा हुआ है, which external auditors do a very good job at। जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हम पढ़ते थे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 401 के अंदर, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के अंदर कि आपने वीकेंड्स पे एंट्री तो नहीं की, रऊफ ने अप्रूव की हैं तो रऊफ ने तो प्रिपेयर नहीं की, इसके अलावा फ्रॉड तो नहीं लिखा हुआ एंट्रीज में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू ऑन द जनरल एंट्री टेस्टिंग। कंपेयर लेबर रिपोर्टेड टू एविडेंस ऑफ वर्क, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। जब प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई की आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ सप्लायर्स क्वालिटी लेवल्स, बड़ी आसानी से जब आपके पास डाटा होता है ना तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एरर रेट क्या आ रहा है। हमने इससे 1 मिलियन चीज़ें मंगाई थी, उसमें अगर 5% का एरर रेट है या 0.5% का एरर रेट है तो वी विल बी एबल टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द वेंडर। नंबर 4 पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हम किस तरीके से कितना टाइम गुजर जाने के बाद हमें मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसका डाटा हमारे पास आ जाता है। मैनेज सप्लाई चेन, जैसे मैंने जिक्र किया था सप्लाई चेन के अंदर वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सप्लाई चेन वर्ल्ड। कंसिडरिंग हमारे पास आखिरी 15 मिनट है, आई वुड लाइक कि अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चले जाएं अलमास, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल ताकि everybody should get a sufficient time to ask questions as well. Yes, absolutely. Thank you very much, Rauf, for your kind gesture, and I hope you can hear me okay. जी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। All right. So we have received good questions, a few questions, and I think the first question, which I was also asking you before we started the session, which is that normally what I see in the case of future accountants, the FCCA student, we call them, they often ask us that there are people who are called data scientists and statisticians who also work on data. They analyze it, they interpret it, and especially the 4 types you mentioned: descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. So in terms of the future accountant and existing accountants, how they can differentiate their role in being an expert of the data analysis themselves, and to what extent they can leverage on others. We mentioned data scientists and statistician. जी अलमास, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और देखें मैं खुद भी ACCA हूँ एंड आई एम वर्किंग इन अकाउंटिंग पार्ट रोल। मेरा रोल जो है मेनली अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऑडिट में हूँ मैं, ऑल्दो आई डोंट इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, बट क्योंकि मैं डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन पे काम कर रहा होता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा होता हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त डाटा एनालिटिक्स के लोगों की, डाटा साइंटिस्ट्स की, डाटा इंजीनियर्स की, विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स की, कोडर्स की। बट डू यू वांट टू ऐड इट एज एन एडिशनल वर्क, एज एन एडिशनल स्किल? जैसे मैं एडिशनल स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ, दिस इज़ माई एडिशनल स्किल कि आई अंडरस्टैंड डाटा, किस तरीके से डाटा के ऊपर काम हो सकता है। और डू यू वांट टू स्टार्ट,
this as a new career. There is no harm in starting this as a new career, but this is what you have to decide कि आप अगर कोडर बनना चाहते हैं या फिर आप स्टैटिस्टिशियन बन के डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं. The easiest part, अलमास, इसका ये होता है कि do some courses, check the waters कि कितना deep है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं. And most importantly, जैसे a lot of people do it, मैंने किया है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, you are doing a good job, and why don't you include it in your portfolio? There are a lot of people from accounting and finance who are actually doing it. It's easier for engineers to do it because they understand the statistics and probability and how to do the programming and everything. अगर वो programming भी उनके लिए आसान होती है, but from my perspective, once you understand जो interpretation का part है, जो आपके पास data requirements का part है, once you understand that, you can have coders in your team and you'll start using them like you do any other day. जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने IFRS लास्ट टाइम कब IFRS खोल के मैंने उसके ऊपर काम किया था. Because although I am an accountant and I understand auditing and accounting standard very well, but मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती because now I have a team. If I have to ask someone, मैं उनसे कह देता हूँ कि मुझे इसकी interpretation करके ला के दो, and then we use it. Similarly, अगर मेरे पास coder, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं jack of all trades बन जाऊँ, but I should understand so that I can tell them the requirements कि मेरी ये requirements are, show me what you can do for that. Hope I have answered this, Almas. Yes, that's articulating very well. Thank you, Rauf. And we have asking, what would be the benefit of Roshan digital account for an individual? रोशन डिजिटल अकाउंट जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और स्टेट बैंक इज़ वेरी एक्टिव इन दैट. द रेट्स दे आर ऑफरिंग इज़ वेरी गुड. द कन्वीनियंस दे आर ऑफरिंग, क्योंकि जैसे नॉन रेजिडेंट आई हैव लिव्ड इन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और अगर मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भिजवाने हैं या मुझे कुछ यहाँ पे पेमेंट्स करनी है या मुझे यहाँ पे गाड़ी चाहिए या मुझे घर चाहिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी टू डू इट, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं यहाँ पे और हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता ही है. Roshan digital accounts help them in that manner. One thing. Second thing is the rates they are offering, the return on investments they are offering, they are very good. So these are some of the benefits of Roshan digital account. And the third important aspect is that is helping your country as well if you keep money in there. Thank you, Rauf. We have Hamad Ahmed who is asking where you explain the 4 types of data analysis. Out of 4, he's asking, he finds predictive and prescriptive analysis types confusing and mixing. So he's requesting if you can share the specific example, if that is possible. बिल्कुल, क्यों नहीं. मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल्स शेयर की थी. लेट मी डू इट अगेन. देखें, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ना, विच इज़ वेरी सिंपल. आपने 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया और आपने कहा कि लेट मी डू दी एनालिसिस. When we were in external audit, we used to do it all the time. जिसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि आपके पास अगर एक एक्सपेंस आ रहा है और आपने पिछले साल से उसको कंपेयर किया and you did the reasons for variation at a little bit granular level, तो आप उसको कर सकते हैं. जैसे कि आपको मैंने कहा कि मेरा बिजली का बिल जो है ना, वो या एक्सपेंस जो है, मेरा इन्वेंट्री का एक्सपेंस जो है वो 1 मिलियन है. आपने कहा अच्छा, आपका इन्वेंट्री का एक्सपेंस 1 मिलियन है, पिछले साल आपने 1 मिलियन में 1 लाख यूनिट्स मंगवाए थे, तो इसका मतलब है 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मंगवाया था. अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लूँ तो दैट विल बिकम 10%, विच इज़ 11 रुपीज़. तो अगर आपने इस मरतबा भी 1 लाख यूनिट्स मंगवाए हैं तो आपको 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 11, your total cost should be 1.1 million. This is the descriptive analytics. आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई काम नहीं किया और based on जो historical data है, बड़ी आसानी से उसके ऊपर आप you are able to identify the issues. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो अभी मैंने पूरी एग्जांपल रन की ना इंटरनल ऑडिट की कि किस तरीके से हम CNIC का डाटा लेते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट की लिस्ट से, दूसरी तरफ हम जो है वो डाटा लेते हैं हमारे कस्टमर के, वॉक इन कस्टमर का जो हमारे डाटा वेयर हाउस में पड़ा हुआ होता है, और उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. वी आर आइडेंटिफाइंग कि हाँ कहाँ पे हमें मुश्किल आ सकती है. मल्टीपल सिस्टम्स आर यूज्ड, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर. थोड़ा सा जो VLOOKUP का फॉर्मूला हम लगाते हैं उसको भी यूज करके आप लगा सकते हैं इसके अंदर, बट अ लिटिल बिट मोर एनालिटिक्स देन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. थोड़ा सा ग्रैनुलर भी हो जाता है, मल्टीपल सिस्टम्स यूज हो जाते हैं, डाटा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है.
क्लीनिंग वगैरह में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है आपको, तो दैट इज़ द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। थर्ड वन इज़ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेस्ड ऑन द आउटपुट, जैसे क्रेडिट स्कोर है आपका, क्रेडिट स्कोर की बेसिस पे वी विल बी एबल टू जज कि आपके पास कितना ज़्यादा डिफॉल्ट का चांस है। क्रेडिट स्कोर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या थी, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका डीबीआर रेशो कितना है, आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितने हैं। इस तरीके से हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज जो कि आप देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे होते हैं क्रिकेट में, अगर आप देखते होंगे कि बॉल यहाँ से यूं करके पड़ती है, टिप्पा खाती है, और फिर वो हॉक आए के थ्रू हमें बता रहे होते हैं कि वेदर इट इज हिटिंग द स्टंप और नॉट, दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। वो आपकी पूरी की पूरी वहां तक की फ्लाइट देखते हैं और उसके बाद उसी को आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हालांकि नॉर्मली जब रिव्यू के लिए हम डीआरएस में जाते हैं तो बीच में पैड आ जाता है, दे इग्नोर द पैड एंड बेस्ड ऑन द किस स्पीड से वो आ रही थी, कितनी दूर तक वो जाएगी, that is the predictive analytics. Another example of predictive analytics is जो आप देखते हैं दराज पे या एयरलिफ्ट पे या अमेजोन पे कि वो आपको बता रहे होते हैं, या फेसबुक के ऊपर कि this is what you should watch, this is what you should buy based on the searches which you do. That is predictive analytics. Prescriptive analytics की मैंने forest fire की example दी थी, based on very comprehensive data, very detailed oriented data, you will be able to असेस कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, वो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अभी हमने पाकिस्तान में यूज़ करना शुरू नहीं किया है। जब एआई, मशीन लर्निंग और इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे उस वक्त हम प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पे जाएंगे। तो दीज आर 4 एग्जांपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स टाइप्स। Thank you very much for your generous response, Rauf. We have Sharif Khan who is saying great session. We are happy, Sharif, that you are finding this session useful and great. We have Hamad Ahmed who is asking us that your slides which you have prepared and have shown us today, those are great slides. So is there any specific software you have used to prepare these slides? So this is the interesting question, Rauf. ये सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन की गेम है और कोई बात नहीं है। ये Okay. सॉफ्टवेयर तो नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट ही यूज करते हैं, बट बिकॉज हमारे पास कुछ स्लाइड जो होती हैं उनके पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह होते हैं, जहाँ से वी डाउनलोड दोज डाटा और वी रिक्वेस्ट देम कि ये चीज़ आप हमारे लिए बना दें, फिर वहाँ से हमें स्लाइड्स मिल जाती हैं। इस तरीके से वी यूज दैट इन आवर स्लाइड्स। जी। Yeah, and lots of PowerPoint templates are there available free of cost on the website, where you can get lots of free slides, and with lots of variations you can add on your data inside and present to the audience. All right, so we have Maqbool Ahmed who is asking, hi sir, is there currently any certification available pertaining to data analytics? I think yes, we have many. So Rauf, please share your response. जी, अभी पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना तो आईबीए करा रहा है डिप्लोमा इन डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स। आई थिंक दे चार्ज यू अराउंड 200,000 रुपीज़। 6 महीने का कोर्स है आईबीए का। इट्स अ गुड कोर्स, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। यू विल हैव टू spend a lot of time in learning that. एनईडी यूनिवर्सिटी कराती है, जो एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, दे हैव द कोर्स फॉर दैट डाटा एनालिटिक्स का। वो 1 साल का कोर्स है। इफ़ यू वांट टू डू अ शॉर्टर कोर्सेज, आपके पास कोर्सेरा में और ईडीएक्स में आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है हार्वर्ड का कोर्स है, दैट इज़ वेरी गुड। आईबीएम का कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें जो कोर्सरा पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का, अगर आपने पावर बीआई का कोर्स करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट पावर बीआई का कोर्स है, वो जो कोर्सरा में आप ऑडिट के थ्रू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। अगर आप बाय करना चाहते हैं फॉर श्योर गो एट फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। मेरा ख्याल है $75 या $80 पर मंथ उसकी कॉस्ट होती है, बट यू गेट द सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग। So these are some of the very specific examples. IBA, NED, Coursera में IBM का कोर्स है, Coursera में हार्वर्ड का कोर्स भी है। You can do those courses. They are very good.
शूलेक वाले कोर्स कराते हैं जहाँ से मैंने MBA किया था, दे हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। कनाडा में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो कराती हैं, तो आई नो दैट। Right, thank you, Rauf. We have Awais Farooq who's asking, what courses do you prefer to carry to become data scientist? अलमास, थोड़ी सी आपकी आवाज आखिर में कट गई। You said to carry this data analytics? Yes, which courses you would prefer to become the data scientist? देखें अवैस, इसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस है आपकी, विच स्टेज ऑफ योर करियर यू आर इन, where you want to be, where do you see yourself, what are your likings and dislikings, और कितना ज़्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, do you want to change your profession or do you want to stay in the same profession and lead this। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक सवाल हो जाएगा, एंड इट विल बी पर्सनल एज वेल कि हमें ये चीज़ प्रेफर क्या चीज़ करते हैं। ये कोर्सेज जो मैंने आपको बताए, दीज आर द कोर्सेज, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप इनमें से कोई भी कोर्स करेंगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट विल गिव यू द आइडिया कि हाँ, मुझे कौन सा कोर्स, कितना डेप्थ वाला कोर्स करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जो है ना वो ये है कि this is a growing field and you will see a lot of requests for this। हम थोड़ा सा भेड़ चाल का भी हम पाकिस्तान में शिकार हो जाते हैं कि one person is start doing it, everybody starts doing it, but this data analytics part is very critical, very important, क्योंकि जो data analytics का component है ना, उसमें आपको you don't have to be bound to Pakistan। डाटा एनालिटिक्स की सारी चीजें ना आप क्लाउड पे बैठ के पाकिस्तान में कर सकते हो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग और यू आर एम्प्लॉयड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल। so it's a field to explore for yourself personally। आपको खुद देखना पड़ेगा where you want to do this field। Thank you, Rauf. We have Alishan who is asking, the tools you mentioned, is there any particular tool which is used widely in industry? जो मैंने आपसे टूल्स शेयर किए थे वो मेनली वही यूज हो रहे होते हैं। जैसे आई नो क्लिक व्यू पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है अमंग्स द बैंक्स। आई हैव यूज्ड टेबलो, आई हैव यूज्ड पावर बीआई, वी हैव यूज्ड पाइथन एंड आर इन आवर बैंक। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हमने यूज़ किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो डेटाबेसेस यूज़ कर रही है उनके साथ कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा अलाइन होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे अगर आपका विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस है तो यू वुड लाइक टेबलो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस हैं एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन स्ट्रेटेजिक अलायंस विद माइक्रोसॉफ्ट, यू विल गो विद द पावर बीआई। तो दीज आर ऑल द टूल्स। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे टूल्स आपको बता दिए थे कि विच एवर यू वांट टू यूज एंड कंफर्टेबल विद एज एन ऑर्गेनाइजेशन। Thank you very much. We have already on 5 p.m. It's just that if we can take a few questions more, if that is okay, Rauf? Yeah, sure, go ahead. Right. Yeah, so we have Ubaid Khan who is asking, could you please throw some light on capturing fresh data as it becomes out of date? अलमास, आपकी आवाज ब्रेक हो गई आखिर। Okay, let me just say the question again. All right, so he's asking, could you please throw some light on capturing fresh data as it becomes out of date quickly? हाँ, देखें डेटा का यूज़ है क्या वो आपको समझना पड़ेगा। डेटा का यूज़ ये नहीं होता, जैसे हम लोग बहुत सारी जगहों पे 7 साल 8 साल पुराना डेटा भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेश डेटा, व्हाट आर यू प्लानिंग टू यूज इट फॉर, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। डेटा जो है वो अगर आपने कुछ एनालिसिस करने के हाउ द फैक्ट पैटर्न इज, जैसे हम लोग करते हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स की यूजेज क्या है, क्या कंजम्पशन है, उसके लिए हम 2020 से 2019 से 2018 से डाटा यूज कर रहे होते हैं। तो जो डाटा है आपके पास, यू विल हैव टू डिफाइन कि डाटा कितना आपने यूज करना है, कितना हमने रखना है, और हाउ मच कैपेसिटी यू वांट टू यूज इट फॉर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग दैट डाटा। हम लोग जो हैं वी डोंट कंसिडर डाटा टू बी स्टेल। अगर मैं 7 नवंबर को 30 सितंबर का डाटा अपनी मैनेजमेंट को दिखाता हूँ तो दे डोंट लाइक इट।
हमें 3 या 4 नवंबर को 31 अक्टूबर पे जाना पड़ जाता है, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू मीन। तो 1 महीने पुराना डाटा, क्योंकि हम मंथली रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें 1 महीने पुराना डाटा 3-4 दिन के अंदर अंदर दे नीड टू नो कि डाटा कौन सा वाला है। अगर उससे ज़्यादा पुराना डाटा हो जाता है तो वी कैन नॉट यूज़ इट, लेकिन देन दैट डाटा इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस कि हाँ हमारा फैक्ट पैटर्न क्या बन रहा है। और जितनी भी मैं आपको अभी एनालिसिस की टाइप्स दिखा रहा था, दैट डाटा इज यूज्ड, मोर डाटा यू हैव बेटर यूजेज यू हैव, क्योंकि आप उसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जी, Thank you, Rauf. We have Fahad Saeed who is asking, is there any difference in big data analytics and data analytics? नहीं, बिग बिग का मतलब सिर्फ बिग ही है इसके अंदर। डाटा एनालिटिक्स में जितना Correct. ज़्यादा आपके पास डाटा होगा वो बिग डाटा इज द टर्म यूज्ड कि आपके पास इतना डाटा हो तो आप बिग डाटा पे चले जाते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि 1 टेराबाइट डाटा हो या आपके पास 10 मिलियन से ज़्यादा का डाटा होगा तो आप उसको बिग डाटा के ऊपर ले जाएंगे। इट्स डाटा एनालिटिक्स है। डाटा एनालिटिक्स आप चाहे 1 मिलियन रिकॉर्ड्स पे करें, चाहे आप 1 बिलियन रिकॉर्ड्स पे करें, डाटा एनालिटिक्स इज डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा से जैसे हम क्वेरीज वगैरह राइट करते हैं, तो हम अगर हमारे पास छोटा रिकॉर्ड होता है, 14-15 मिलियन कस्टमर्स के ऊपर हमने क्वेरी रन करनी होती है, तो वी डू इट ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर हमें 500 मिलियन ट्रांजेक्शंस के ऊपर क्वेरी रन करनी होती है तो वी डू इट एट द एंड ऑफ द डे, ताकि वो बाकी सारा सिस्टम जो है हमारे पास अवेलेबल हो। और अगर उसमें 2 घंटे लग रहे हैं तो वी जस्ट रन द क्वेरी एंड सी द आउटपुट इन द मॉर्निंग। बिग डाटा इज ओनली Right. बिग डाटा। Thank you. We have Shumaila Moti who is asking what course is best for ACCA student, and I think it's important also to guide them that what's the starting point for the ACCA students as future accountant to start for the data analysis. देखिए, सबसे बेहतर तो ये होता है कि आपको टू लर्न द बेसिक्स यू शुड गो टू ऑनलाइन टूल्स। जैसे मैंने कहा, कोर्सेरा में आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का करेंगे तो यू विल गेट दी आइडिया कि डाटा एनालिटिक्स होना कैसे है। और अगर आप उसमें सिर्फ बिग डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लें आईबीएम का कोर्सेरा से, दैट इज़ आल्सो फ्री। उसके 4 या 5 मॉड्यूल्स हैं। जब आप पहला करेंगे ना, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा वाला, तो यू विल गेट दी आइडिया कि क्या चीज़ है बिग डाटा, किस तरीके से मैंने उसको यूज़ करना है। और यू विल बी एबल टू एनालाइज कि हाँ मुझे इसमें मज़ीद डेप्थ चाहिए या नहीं चाहिए। एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज, कोड, स्टैटिस्टिक्स। और अगर आपने डिप्लोमा वगैरह करना है उसमें, तो यू विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम देयर। Right, thank you very much. And we have lots of appreciation and thanks coming in on the comment section as well for your time and for the very rich and detailed insight you have shared with the audience. And for that, I thank you very much for your time, Rauf, because you have been able to give us so much good time and useful time for the people. And this will go in their journey. And all the participants, thank you so much for your time that you have intentionally taken out for your development, because that's the important aspect. And thank you so much for your all questions. Just a few announcements that the recording of this webinar will be made available on our website of ACCA Pakistan. The landing page address with the name is the Bridging the Gap webinars. You just need to type that Bridging the Gap webinars in Google and you will get hold of that website. And we will update the recording of this session, which you can refer again in future, and also you can share with your classmates, with your line managers and your friends who are interested in this topic. So with this, thank you very much, Rauf, once again, and all the participants. You have any last words of wisdom, Rauf, for our students? नहीं, थैंक यू वेरी मच अलमास फॉर इनवाइटिंग मी। और जब भी कोई नई फील्ड आती है ना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या चीज़, किस तरीके से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन, बट दिस इज़ समथिंग, चाहे आप ACCA कर लें, चाहे आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएं, यू विल बी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। मैं आपको फॉर श्योर बता दूं, जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे उतना आपको आसानी है। एवरीबडी विल बी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। जिस तेजी से डाटा एनालिटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, दिस इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन। जो शुरू में मैंने कहा था, ऑटोमेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर हर किसी ने काम करना है, बट डाटा एनालिटिक्स में हर किसी ने काम करना है। देयर इज नो वे कि आप 5 साल के बाद जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो यू विल नॉट बी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, यू विल बी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। तो
better to jump on it right now than later. Thank you very much. Thank you very much all once again, and take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you ji. Assalamu alaikum.